वैलिडेटरी सत्र शुरू होना है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि थोड़ी ही देर में समापन सत्र शुरू होने वाला है। इसमें हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर अनिल अनेजा जी जुड़ेंगे, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड हैं और बहुत सालों तक आप नोडल ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
हेलो अनीता जी, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाइए। हम लोग गेस्ट का फिर जो स्वागत करेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, बस 2 मिनट की, ठीक है। उसके बाद आप कार्यक्रम शुरू करिएगा। हाँ अनीता जी, आप कार्यक्रम शुरू कर लीजिए। धन्यवाद। आप आप लैपटॉप के पास जाके बोलिए, वो माइक की आवश्यकता नहीं है। सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। 3 दिवसीय WDC 1 का आज ही समापन समारोह कार्यक्रम है और इसमें हमारे जो माननीय अतिथिगण हैं, शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं और हमारी जो छात्राएं हैं, मैं आप सबका मैत्री परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ठीक है, आप आगे बढ़िए अनीता जी। जी अनिल सर को को-होस्ट बना दो। जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल। He cannot unmute himself. ठीक है, को होस्ट हो गए हैं सर। आप अनीता जी कार्यक्रम आगे रखिए। जी जी, मैं सबका मैत्री परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित छात्राओं से एक बार अनुरोध करती हूँ कि करतल ध्वनि से एक बार हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सभी बच्चों से अनुरोध है कि तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। सबसे पहले वर्चुअल माध्यम से हम लोग प्रोफेसर अनिल अनेजा जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रमोद जी, सभी लोग? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, ठीक है, जस्ट ए मिनट। अब मैं जो जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंगलाचरण से बाद में करेंगे, उनका मंगलाचरण के बाद। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिरुद्ध ओझा से अनुरोध करती हूँ कि वो वैदिक मंगलाचरण के लिए आए। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस त्रिदिवसीय विश्व सम्मेलन के अंतिम सत्र में समुपस्थित आप सभी अतिथिगण एवं उनके बोलिए चले जाएं सेमिनार रूम में। ज्योति हाँ हाँ, सादर नमन करता हूं और मैं इस कार्यक्रम के शुभ मंगल हेतु वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत करता हूं। हरे
Om Gadanantva Gadapate Gum Hava Mahe Nidhinantva Nidhi Pate Gum Hava Mahe Baso Mama Ahamajani Garbhadhama Tvamajasi Garbhadhama Swastina Indro Bridhastrava Swastina Kokha Vishwaveda Swastina Staraksho Arishtane Swasteno Brihaspatir Dadhato Yoma. As is the tradition that we begin all the auspicious occasions with an invocation to Almighty, and Dr. Ojha's Mangalacharan was that step from our side to invoke the blessings of the Almighty. Now I would like to introduce the guests for the event. Our chief guest for the valedictory session is Professor Anil Aneja, who has joined us online in today's hybrid valedictory session. Professor Aneja has a long and distinguished career of more than 30 years in academics. Presently, he's working as a professor in the Department of English, University of Delhi. His significant books include the novels of L.H. Myers in relation to Indian history, myth and thought, human rights and volunteerism, combating discrimination, some path-breaking initiatives for the visually impaired, and a comparative study of the visually impaired children studying in special and inclusive schools. One of his recent publications is an edited volume of 20 autobiographical stories titled Testimonies of Success. Professor Aneja is also the nodal officer as well as grievance redressal officer for persons with disabilities and officer on special duty at the Equal Opportunity Cell, University of Delhi. For nearly 25 years now, Professor Aneja has been actively involved in the disability sector in various national and international roles. Presently, he is the president of the All India Confederation of the Blind and chair Rehabilitation Committee, World Blind Union. Professor Aneja was conferred the National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities by the President of India in the year 2014. In 2017, he was presented with the Achievers Award by the Indian Eye International Human Rights Observer. He was also conferred the State Award in the category Best Individual Working in the Field of Social Work by the Government of NCT of Delhi, and the prestigious Rustam Mewanji Alpiawala Memorial Award 2020 by the National Association for the Blind. Recently, he was also conferred the prestigious NAB Sarojini Triloknath Award 2019. We are very fortunate to have you amongst us, sir, and we extend once again a very warm welcome to you. Thank you. I will request that sir, may I now request you to please address the gathering? Thank you very much for that very warm introduction. But since you seem to have used the old CV bio note, there are certain facts which need to be changed, and I think it's important that I correct those because I am a part of the gathering with you today. So nothing that is not correct about me should go. So I'm no longer the nodal officer and the OSD of Equal Person. The reason is that after taking over the head of Department of English, Delhi University, I relinquished those charges.
I am, of course, now the Director Center for Disability Studies of Delhi University. So these were the two corrections that I wanted to make, so that people should not think that I'm claiming, right on positions which I do not hold. So thank you very much for that very warm introduction. And I'm really honored to be invited to Maitri College. Thankfully, not for the first time. The college has been kind to me. The enabling unit of the college has been kind to me, and I have had the good fortune and the honor to be associated with various activities of the enabling unit of Maitri College. I was there as a part of the F1 FDP program that they had offline. I was also a part of the online FDP program which they had in 2021. And I must commend the work done by Maitri College, and particularly the enabling unit, Dr. Smriti Singh, Dr. Pramod Kumar, and other colleagues in promoting not just excellent support services for persons with disabilities, but keeping up with times and engaging in discourses which are current to the field of disability, and not just engaging themselves, but also trying to promote such discourses within the domain of disability studies in other colleges of the university and beyond that at the national level, of which this particular event, the conference, the 3-day conference, which we are concluding today, is one manifestation how the college has been trying to reach out disability at the national, foreground disability at the national and the international level, how the college is trying to keep abreast with the latest developments in the field, and how the college is fully committed to ensure and developing field equality and inclusion for persons with disabilities in all spheres. I think Maitri College really has done a yeoman service in this area and needs to be congratulated. So congratulations to everyone who has been a part of this event and other endeavors of the college over the years related to disability. As we are now at the close of the conference, and that too after lunch, it's very difficult to say anything, because all that one would like to say has already been said. Perhaps you must be somewhat, if not physically very exhausted, at least mentally very exhausted, because of the strenuous discussions that you have had over the last 3 days, and perhaps wanted to get back and hoping for a brief lecture from me, so that a brief intervention from me, so that it could get over soon. So I will not disappoint you there. I will not say much, but just perhaps by way of complimenting all that you have discussed and all that has been presented. I understand it has been a wonderful conference. Papers on various diverse areas, not just diverse, but papers on very new areas have been presented. You had eminent speakers from the field of medicine, from the field of law, from academics, established colleagues in various fields, as well as budding research scholars have been a part of this conference. And really, it has been a global international conference in the true sense of the word. So I wish and do hope and strongly suggest that other colleges, not just in Delhi, but across the country, follow these examples and have such events, because these are the only ways by which we can try to introduce disability, or should I say, add new dimension to disability. The theme of your conference is contemporary interventions in disability discourse. So I've been talking mostly about disability and not so much about disability studies, though the very fact that you're talking about contemporary interventions, disability studies is one such contemporary intervention in the field discourse of disability. So to that extent, yes. But I'm happy that you've taken a much larger rubric, that's disability, vis-a-vis disability studies, which people, intellectuals particularly working in the field of disability studies, often tend to take, leaving
the experience of disability behind. It is my argument, and I'm supported in this by none other, by many scholars, but I would like to cite one particular scholar, Michael Oliver, his book, Understanding Disability from Theory to Practice. If you look at chapter 2 of that book, The Fundamental Principles of Disability, he defines certain universal issues relating to disability. These issues are 4 in number: the definition of disability, the role of the experts, the experiential aspects, and politics and dimensions to disability. I would strongly say that sometimes, and Oliver is also critical of this, the roles of the expert, people who claim to be experts on disability, often overlook the role of persons with disabilities, the movements, the struggles, the experiences, in favor of a more intellectual, desk-based, should we say, purely academic engagement to disability. By way of my valedictory remarks, I want to stress the point that that is a rather dangerous kind of tendency, and we need to guard against it. I'm not saying that disability studies as a discipline should not be, cannot be studied without paying attention to disability movements and the experiential aspect. They're definitely the intellectual dimensions, and the engagement of disability studies or engagement with their various disciplines through the rubric of disability studies is something to be welcomed. But the moment we try to divorce it from the disability movement experiences and make it purely as an academic discipline, we run into the danger of then going away from reality, and no academics engagement, in my view, should be away from the realities and the context in which these take origin and development. It's very important to be strongly rooted in that domain of experiences and movements. The struggle of disability is the father and the mother of disability studies. You should never, many people write, disability studies began in 1986 with the renaming of particular organizations as the Society for Disability Studies. Then they go on to certain courses being offered and certain publications, surely. But that is from 1986 onwards. Would such developments been possible if the struggles of organizations of persons with disabilities soon after the first word onwards, I don't even want to go beyond that, but after the first word, definitely there have been concentrated struggles and movements regarding various issues concerning disability, whether it is the development and acceptance of the white cane, coming into existence of organizations such as ONCE in Spain and National Federation of the Blind in USA in the 1940s and 50s, engagement of various writers with disability issues such as D.H. Lawrence, James Joyce, D.H. Lawrence, Ernest Buck, and many others. I mean, one could just go on. If we talk about Indian context, Premchand, and many others. See, if such engagements had not been there, would disability studies as a discipline, would it be possible for it to progress in the 1980s and 90s? Perhaps not. And therefore, as we engage with ourselves with the contemporary intervention in disability discourse, it's important that we try to find connects and not isolate disability studies from what has gone before the 1980s and 90s, where by some scholars, the origin of disability studies is seen to be. It's very important that we find the connect. Even in India, there were strong disability movements in 1960s and 70s, the coming into existence of National Federation of Blind Graduates in 1970, which are renamed as National Federation of the Blind. The first government interventions on disability
I regard the first government intervention on disability by the Indian government as early, if my dates are not too wrong, in 1960s, when to my knowledge, first time concessions in transportations were provided in railways, in some states, buses, and so on and so forth. Now you can say these were charity models. It's very easy to discuss. But without accessibility, even today we are fighting for accessibility. Even today we are fighting for some kind of what we call reasonable accommodation. The terminologies have changed. But if those facilitations were not there, would the movements of persons with disabilities been as frequent as it could be because of certain facilities being provided by the railways and the road transport? Would the employment of persons with disabilities would be as strongly there as if we didn't have the first office memorandum in as early as 1977, reserving 3% vacancies for persons with disabilities? A fact which is often not well known. People link the reservation policy to the PWD Act of 1996. That is not true. Many people should know that both reservation in Group C and D services, which came into existence in 1977, 4th November 1977, and also reservation in promotion, which came into existence in 1989, both events took place before the coming into being of the Persons with Disabilities Act of 1996. The point I'm trying to make is, the larger point that I'm trying to emphasize through all these examples is that while it's very good to look at the contemporary interventions, we should not forget their roots. While it's very good to see how many books are now coming out in academic domain, we also need to guard ourselves whether the academic work which has been done in the field of disability is actually validated by the materials, the experiences, and the documents which are available in the disability sector during this period or before this. At Delhi University, we have taken a number of steps to promote disability studies in a big way during last few years. I remember when I joined the Department of English some years ago and talked about disability studies, people wondered what I was talking about. My then head of the department told me that some of my ideas may not be very easily accepted. Where I introduced an MA course under internal assessment scheme on literature and human rights, people wonder what I was talking about, because till then the tendency was to see specificities of discriminations and segregations and stigma in terms of various categories, but not see these in the context of a larger framework, which I term as the human rights literature, under which everything comes. Disability studies, Dalit studies, gender studies, queer studies, everything, anything to do with human rights would come with human rights literature. And this platform has a strong potential, as it has already exhibited, in providing a platform for discussions and dialogues, for exploring intersections, for learning from each other in various disciplines of marginalities. So while individual specificities are very important, trying to find connects between these and trying to understand experiences, our own experiences, by trying to understand the experiences of other marginalities, will not only enrich our own understanding and knowledge, will also help us cope up and negotiate with these experiences in a different way, in a more enhanced, more empowered way. So I was telling you the story of my own. A few years ago, when I joined the Department of English, and the then head of the department told me some of my ideas would not be accepted. And at that time, I had an offer of appointment in another university department on the same post, similar post. And I was wondering which of the two I should maintain. But then when the concerned person told me that some of my ideas would not be accepted, because nobody had heard of these kind of things, perhaps, or people hadn't paid. I'm sure they would have heard of it, but attention to the cost needed extent may not have been paid by some.
That was the day I decided I will work with English department and ensure that disability studies becomes an important area of discussion and study over the years, which was also my professorial commitment in my applications, in my professorial commitment. I'm happy to say today, we have our many PhD students who are not persons with disabilities working on disability. We have so many colleges talking about disability studies. Maitri College has taken a big lead, of course. You've done a number of activities. But there are so many people. I can see the online joining is around 50. There must be a very offline audience. So many people joining on a 3-day conference, being present on the valedictory session of the 3rd day. It's a big thing because people get exhausted running this marathon for 3 days. It's a very big thing. Any conference which can run the 3rd day is worthy of being called an excellent conference because it's very difficult to maintain this interest. And you have been able to maintain that interest, it seems. So we have many PhD students. We run an MPhil course on disability studies. We have disability studies as a core paper in MA, and now I'm happy to announce in this platform, it's my first public announcement on this matter. Now we are going to have literature and disability as a core paper even at the undergraduate level, from the coming academic year under the UGC. We're going to have this as a core paper. So much has changed, but it has not been easy. The struggle has not been easy to get disability on the mainstream, on the main campus of English studies at Delhi University or other universities also. Do not think that resistance is only in conservative context. Do not think that the resistance and discrimination only in the orthodox condition context. Not at all. Sometimes even the most so-called enlightened culture, so-called enlightened intellectual domains also become areas of resistance. The expressions of that resistance may be different, sometimes covert, sometimes overt. But expressions are there. It's not that you just put a proposal and it comes through. No, it's been a big struggle, but happy to see now we have disability studies all across. I strongly urge your college, the audience, and all the other colleges to make use of this opportunity to ensure that all the contemporary interventions that you talked about, there are various. If I get into those, there'll be no time perhaps. And I promise I will brief. I will not make demands on your patience so much because I do understand the constraints, and I'm sure the program would have other activities also after this. I wish, first of all, I also apologize before I go further on this point for not being with you offline. There are administrative constraints in the university which require my physical presence as a must in the university today. So therefore, I could not be. Otherwise, I was just hoping and to be part of all of you there, offline mode and spending some time with you, which unfortunately could not be for some other time. I take happiness in the thought that I have been part of Maitri College, so I know your warm hospitality and look forward to it in future. But that apart. Yes, so make use of the opportunity to bring disability more on intellectual canvas by adding dimensions other than which are already there, so that the area can become richer and richer. Many disciplines that we talk about today were unheard of a few years ago. There was a time when gender studies and women's studies were also not very much accepted. A few years ago, Dalit studies were hardly heard of. I strongly believe that the future of research and academics, as far as the new areas are concerned, rests now with disability studies. And disability studies would not just be, I'm sure you're ensured that, an intellectual domain. It will help us our understanding in a manner that we are able to create a better environment, a more sensitive environment, a more empowering environment for our students and faculties with disabilities in our colleges, in our communities, in our families, in society, in the world. Unless this is what we talk about, the movement from the welfare, the charity model to the rights-based model, which is now given way, as Michael Oliver talks about and Wilkinson also talks about, the administrative model.
All models have now to combine. I think this binary that we are trying to create, looking at disability studies from one model, either the medical or the charity or the rights-based or the social or the administrator, now a time has come to integrate all these models. Because while individual experiences cannot be set aside, individual predicaments and requirements need to be taken note of. The collective experiences of disability also is something that is important to create lasting changes in the systems, in the environment, in society. Both would get impetus if case our own understanding of disability and disability studies through disability studies is enhanced, is nuanced, is comprehensive. And I wish the administrative messages were not being sent in between, because what's happening is that every time a message is coming, my screen reader is reading this, and then I'm getting distracted. So I request the administrator, the MCs of the program, kindly wait for sending. Okay, sir. Thank you, sir. Please. Yeah. Also, people's attention goes away from the lecture then if they're still sending the administrative messages, the logistical messages, I would say. Yes. So I would say, because our own more sensitive understanding, we will not just help ourselves, we will help the world. Conferences such as these play an important part. This conference particularly would have played an important part, I trust, because of the range of speakers that you have had, the range of presentations and topics that you have covered, and the range of audience that you have had. I wish all participants best of luck and a good day, and further more intense engagements with disability studies and disability in your institutions, in your immediate surroundings. We don't have to do anything big in life. Remember that big changes come with very small actions. Let's see, rather than talking big, how in our own limited world, in our room, in our family, in our education institutions, in our workplace, in our community centers, in our cinema halls, how wherever we are, we can create a better world for persons with disability. If we can all do our bit, time will not be long, that the dream of equality and inclusion and the vision of empowerment which every person with disability has and desires for will become a strong reality. Thank you very much. I'm through, Pramod. Smriti, I'm through. I'm just there, sir. Everybody can hear me? Yes. It was always pleasure to have you, sir. And I know in what constraint of time you have taken out time, just because you are our mentor, you are our advisor, and because of you, we could do things. Thank you so much for being there. But stay over, sir. We have to launch our journal, and it would be nice if you could stay over for us for some time. Yeah, I'm staying over. No, because I know you have other activities, so I kept my intervention brief. But I would be with you. Yes, I'm with you. Yes, sir. Okay. I'm with you. Anita, now you go ahead with the session. I would now like to welcome yet another very distinguished guest for today's valedictory session, Mr. K. Vikram Sima Rao. Mr. K. Vikram Sima Rao, sir, was a civil servant in Government of India for over 34 years, with postings in various central government ministries, cabinet secretariat, and a rare stint as special assistant to the chairpersons of National Human Rights Commissions of India. Mr. Rao contributes to Times of India's columns and other various reputed journals, besides taking part in radio and television programs on a variety of subjects. He is also actively involved in managing his YouTube channel, Discover Yourself, alongside the other social media channels too.
He is an author of a recent book, Practical Tips to a Guided Self-Discovery. Now, this is for the audience who've joined us online and even the audience who are present here. We are posting a link, the Amazon link to this group in the chat box. You can take a look at it, and this is going to be of immense help to you. So this book is titled Practical Tips to a Guided Self-Discovery. Mr. Seema Rao also is presently working on his next projects, Bhagavad Gita Simplified, Right Lifestyle Can Keep a Doctor Away, and a guidebook on children with disabilities. Mr. Rao also is interested in yoga and loves to travel, cook, and also watch movies in his spare time. We are incredibly fortunate to have you amongst us, sir. I once again extend a very warm welcome to you on behalf of Maitri College. I will now request our conference convener, Dr. Smriti Singh, to kindly felicitate Mr. Rao. Can we have a round of applause, please? नूपुर, अगर कोई विद्यार्थी हो उसको भी जोड़ करके इसको अन्य दर्शकों को भी दिखाया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। किसी ने ज्वाइन किया है? जी सर, we have our NSS volunteers here. We'll just depute them. या अच्छा रहेगा क्योंकि प्रतिभागी भी ये दृश्य देखना चाहते हैं। जी सर। सर 80 पार्टिसिपेंट यहाँ पे है हमारे पास, 80 बच्चे बैठे हैं जो भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। अब मैं हमारे जो अगले अतिथि हैं डॉक्टर उमेश। मैडम आप लैपटॉप के पास बोलिए, स्पीकर से नहीं आता यहाँ पे, ऑनलाइन नहीं पता चलता ना। हमारे अगले अतिथि डॉक्टर उमेश कुमार सिंह है। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज साइंसेज यूएसए में असिस्टेंट प्रोफेसर है और सर ने 2009 में पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही की। सर की एमफिल भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही है और सर ने वेद और संस्कृत में उनके बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं और उनकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 9 पुस्तकें उनकी पाइपलाइन में हैं जो प्रकाशित होनी है और सर ने अनेक उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत उनका हम सम्मान करते हैं। बहुत उनका यहाँ पे हम उनको सम्मानित करते हैं। मैं सर से अनुरोध करती हूँ और अपने टेक्निकल स्टाफ से अनुरोध करती हूँ कि वे उनको सम्मानित करें। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। अब मैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से अनुरोध, ठीक है, अब मैं जो है नुपुर से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। So we move to the next leg of our valedictory session, which is, I'm sure, something that all our participants have been eagerly waiting for, because this is that moment where we recognize the hard work that all of us have done in the past 3 days, the beautiful presentations that we've all had, and our committee, the peer review committee, out of those presentations, picked up a few papers for publication. And now we're going to launch our first ever journal, which is titled Contemporary Interventions in Disability Discourse, an International Interdisciplinary Bilingual Journal. This is going to be the very first issue of our journal, and this, I would like to tell our audience, is also a peer-reviewed journal. So all the selected papers are going to be a part of this publication. We will, as you can see on your screen,
This is the cover page of our journal. Let's launch this journal with a loud round of applause, please. We really hope that we keep making positive contributions through this platform. And as Professor Aneja also said, that we bring out the ideas which are needed to be heard today. Now over to you, ma'am. अब मैं अपने मुख्य अतिथि के.एस. राव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। सर। Good afternoon, all of you. I hope I am audible to the last bench. Am I audible? Yeah. Chief guest, Professor Aneja, organizers, ladies and gentlemen. It really gives me great pleasure to participate in this important conference, the valedictory function of the International Conference on Interdisciplinary Approach for Disability Discourse. In fact, this is my second visit to this college, and I'm very happy that the Delhi University and the Maitri College are taking interest in the disability issues. I fully agree with what Professor Aneja has said. In fact, he has made me disabled on two accounts. One, he has covered all the points, no point left to me. Number two, I am not as eloquent as he is. But I'm very happy that the points that he has raised are very important, that the research should not be separated from the reality. I am also from Jawaharlal Nehru University. At that time, I found that the External Affairs Ministry was very much dependent on the academia of JNU whenever it related to issues relating to foreign policy. So the government depended on a very good think tank from JNU. So that because the JNU has been conducting a lot of research on various issues, because that time the Cold War was there after the Second World War. So a situation was so difficult that the government had to depend on the intellectual perspectives on how we go about and frame our net of foreign policy. Similarly, when I joined government here in the central government, where in 2012, as soon as I joined, the Department of Empowerment Person with Disabilities was formed. I do not know whether in any country you have a separate department, one full-fledged secretary only for disability. But we have in India from 2012, where the secretary is able to devote 100% time for disability. Before 2012, the secretary was able to divide only 25% of his time to the issues. So I found as soon as I joined, within I think 3-4 years, the new law was enacted. As you know, there was a 1995 Act, but the new law of 2016, Rights of Persons with Disabilities Act, was enacted. A lot of disability associations were involved in framing of the law, and a number of academic institutions also took active part in this. It is not just enough the law has been framed. No, what is important is how the law is being implemented is what we have to see. The
educational institutions have a role to see how the people are able to benefit, whether their rights are being promoted and protected, and what are the main issues that have to be researched. For example, we have 21 disabilities as per the Act. What are the causes of disabilities? How we can prevent them? Because there are many disabilities which we are not aware, even science is not able to tell us. But probably on certain research, on certain surveys, we can try to know at least certain reasons why certain disabilities happen in the general population. Like in India, it could be even delay of the parent taking action, timely action in taking the child for early detection and intervention also can be causes where disabilities occurred and it would have even aggravated. I feel that some of the important areas which require research are prevention, early detection and early intervention. Because the parents bear the brunt. When a child is born disabled, the parents they do not know what to do and where to go. I think that is the first point where all of us have to concentrate and see how we can empower the parents and tell them that now the facilities, the support of the government and also society is available, that they are not alone and they have to be guided. In fact, probably even when the woman becomes a mother, probably she has to be sensitized because we do not know whether the child will be born able or disabled. So I think mother has to really know in advance so that it is not a shock after the child is born. The whole family has to be sensitized to say that they're not alone and the child will be safe because the society is now becoming sensitized. In fact, I am planning to write a book on a handbook on parents of children with disabilities that could help them to know what to do, where to go, what kind of facilities are available, what rights are available for the children, and what the government is doing, and also what are the best practices and what are the success stories. I think that will really boost up the morale of the parents. Otherwise, they would be lost. They will not know what to do. I think the academia has a strong role to sensitize the society on this important aspect. If the parent can take early action, probably we can prevent a lot of disabilities, we can reduce the degree of disabilities. And other important issue is education. We talk a lot about inclusive education. I think we are not doing much, neither providing facilities in the special schools, nor in the mainstream schools and colleges. I think research also has to see what are the barriers that the persons with disabilities of all the 21 categories are facing. Why is it that only certain type of disabilities are able to have access to the education institutions and higher education institutions in spite of the reservation, why others are not able to pursue? It's a very important area where if we can know the main reasons, then probably we'll be able to take things forward to make certain changes. And only if they are able to enter the educational institutions, probably there's scope for them to get jobs and also for self-employment. Other area is accessibility. The Act has provided certain time limits of 2 years for services, 5 years for physical accessibility. Research has to see what steps government is taking, not only the central government,
the state government, the district authorities, how long it will take for the target to achieve accessibility in all the physical environment, transport, and ICT, how much time it will take and what are the steps. Because we cannot delay. The more we delay, the rights are denied. Whatever the facilities and rights are available for persons without disabilities should be available for persons with disabilities, that is guaranteed in the Act, including sports, culture, and recreation. The government is taking steps in all these areas, but lots to be done. Other important area I think we have been slightly exposed is disaster management. During COVID situation, lots of children, persons with disabilities, and parents face a lot of problems. Whether it is earthquake, whether it was cyclone, or even COVID pandemic, each of them have different, they throw up specific problems. Unless we have proper disaster management, have some kind of tests in the normal situations, we will not be able to handle such huge disasters, such in a large scale, not only at the national level, but at the international level. Two things which are very conventional, but which we cannot ignore is one, changing the perception of the public. The lot of prejudices are there regarding the abilities of persons with disabilities. That has to be changed. Maybe changes happen, but it has not happened in a large way. Still, many people in different levels of the society still have certain strong prejudices. They do not realize, they do not have sensitivity towards the persons with disabilities. That probably the academic institutions can play a very important role. The second aspect is sensitization. Yes, people may be positive, having positive attitudes towards persons with disabilities, but they have to be proactive. They have to ensure that the rights are promoted and protected. That is possible when we sensitize the functionaries at various levels. It could be in education institutions, it could be government, senior functionally, middle level, junior levels, in the health sector, in the grassroots level where you have ASHA worker, Anganwadi workers, etc. All have to be sensitized. Only then they will be able to be proactive and fulfill the demands, the expectations of the rights of persons with disabilities. I am sure that, in fact, somewhere in 2011 or 12, I had seen the Delhi High Court judgment where the court passed an order that there should be one department of disability in every university. I do not know whether to what extent. Yes, we do have in Delhi University Center for Disability Studies, of which I'm the director, and all of you are a part of it. Yeah. Yes. I do not know how many universities in the country are having the disability department. So I think the more departments are created in various universities, I think the disability will get a lot of focus. Disability studies and rehabilitation research is very important so that we can solve the practical problems of persons with disabilities. With this, I would like to conclude, and I wish the Delhi University will set a kind of, will play a leading role for other universities in the country, and also bridge the gap between the people and the government so that the benefits accrue to the persons with disabilities in the shortest time as possible. And before concluding, I would like to say that all of you must read, I don't know, please raise your hands, those who have read the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. How many of you have read UN Convention?
I see only just three hands. And how many have read the Rights of Persons with Disabilities Act? Yeah, I think these, I think I find 6 hands which are raised. I think next time when you have these international conferences, I would request Professor Smriti and other organizers, please ensure that each participant attends the conference only after studying these 2 documents, the UN Convention and the Rights of Persons with Disabilities. The reason I would give you is that UN Convention will tell you why the Rights of Persons with Disabilities Act was enacted. And why we have to read the Rights of Persons with Disabilities Act is that we will know what are the rights of the persons with disabilities and what are the duties of the government and society. So I think, like the Indian Constitution, if anybody has not read the Indian Constitution, I think we cannot be called enlightened citizens. Same way, if somebody wants to do research in disability, they must be thorough in these 2 documents, UN Convention as well as the Rights of Disability. Let me add the 3rd document is Sustainable Development Goals, because that shows that which are the areas where priority has to be given for persons with disabilities. So these 3 documents, I think everybody must read. Madam Professor Smriti, you have to take active role, seeing to it at least they read these 3 once in their life, so that they can really know the spirit of these documents and what actually we can do for persons with disabilities, because that is their right. And we have to see in our personal life and also social life that we not only not violate their rights, but also we should help them to promote and protect their rights. It is our duty. Thank you very much. धन्यवाद सर। मैं प्रमोद सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम। Pramod, Smriti and Pramod, I have to leave now for another meeting, so I request to be excused. Sir, if you could wait for few minutes, Pramod can represent. If you could know outcome of our FDP, Okay. international conference, that would be nice. Sure. I request our dear colleague and convener of the this international conference, Dr. Pramod, to come and represent in front of outcome of the international conference, so Aneja sir can hear him before going. Thank you so much. Yeah, please don't worry. I will be there till Pramod finishes. I will be there. जी आपको सुन के जाऊंगा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप, मुझे पता है आपकी व्यस्तता, उसके बारे में हम लोगों को बखूबी पता है। बाकी मैं चाहता हूं, चूंकि आप सारे सत्रों के बारे में तो अवश्य ही स्मृति मैम से सुन लिए होंगे, मैं चाहता हूं कि आपको एक सामान्य रूप से एक अति संक्षिप्त इसका जो झांकी है वो दिखा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए और ये जान सके कि हम लोगों ने WDC के जो प्रथम संस्करण है, फर्स्ट हमारा रहा ये उपक्रम, उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो जो आउटकम है वो कुछ मैं आप लोगों से, प्रतिभागियों के साथ भी साझा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का जो ये कार्यक्रम था, इसमें कुल मिलाकर के 402 प्रतिभागियों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, सम्मिलित हुए। पूरे अलग अलग सत्रों का हमने एक लेखा जोखा निकाला है, उसके अनुसार ये डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, जिनमें से 274 ऑनलाइन जुड़े और हम लोगों से 128 लोग जो है ऑफलाइन मुखातिब हुए। ये एक सामान्य जो डेटा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इस दौरान कुल पेपर 55 पेपर प्रेजेंट हुए, शोध पत्र पढ़े गए हैं 55, जिनमें से अगर हम सत्र वाइज बात करें तो कुल 10 सत्र आयोजित हुए। उसमें से 8 टेक्निकल सत्र था, एक इनागुरल उद्घाटन सत्र और एक वैलिडेटरी सत्र लेकर के टोटल 10 सत्र आयोजित हुए।
स्पेशल लेक्चर इस दौरान हमने विद्वानों को जो डिसेबिलिटी एरिया के एक्सपर्ट जैसे प्रोफेसर अनिल अनेजा जी हैं और राव सर हैं, वशिष्ठ जी आए थे या डिसेबिलिटी कमिश्नर आए, उस तरह से कुल मिलाकर हमें 13 विशिष्ट महानुभावों का जो विशिष्ट महती इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वज्जन हैं उनका हमें आशीर्वचन मिला, उनके लेक्चर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर रिसर्च पेपर्स हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 43 रिसर्च पेपर इंग्लिश में पढ़े गए, हिंदी में कुल 12 शोध पत्रों का वाचन हुआ। और ये अपने तरह का एक देखा जाए तो हाइब्रिड मोड में होने वाला मुझे लगता है कि भारत का पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां ऑनलाइन में भी लोग आए, ऑनलाइन आ करके ऑफलाइन को देखा उन्होंने, ऑफलाइन रह के ऑनलाइन लोगों को सुना। और भी कॉन्फ्रेंस होंगे लेकिन मैत्रेयी कॉलेज के द्वारा हाइब्रिड मोड में होने वाला यह फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। उसका आउटकम कुछ आपके सम्मुख मैंने इस तरह से प्रस्तुत करना चाहा है। और कुछ इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिए गए मैत्रेयी महाविद्यालय के द्वारा वो इस तरह से है। इसमें हमारी शोध स्मारिका सोवनियर लॉन्च की गई एक, इसके अलावा रिसर्च जर्नल अभी थोड़ी देर पहले ही उसका विमोचन हुआ जो इंटरनेशनल बाइलिंगुअल रिसर्च जर्नल है, पीयर रिव्यूड रिफरीड। और उसके अलावा WDC अपने आप में वर्ल्ड डिसेबिलिटी कॉन्फ्रेंस उसका पहला संस्करण है, ये इसे भी मैं मानता हूं कि ये भी हमारे महाविद्यालय का प्रयास है, डिसेबिलिटी के दिशा में कुछ करने का एक उपक्रम है, तो इसे भी इनिशिएटिव के रूप में लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो ये लॉन्च क्या क्या किया गया, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा ये स्मारिका जिसका ई वर्जन भी लॉन्च किया गया, हार्ड कॉपी भी लोगों को प्रदान किया गया। और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल का पहला जो फर्स्ट पेज है वो अभी रिलीज किया जा चुका है, विमोचन है, ये ऑनलाइन होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश में शोध पत्र दिए जा सकते हैं। अभी ये UGC केयर लिस्ट में नहीं है, ISSN प्राप्त करने की दिशा में है, लेकिन हम लोग अनिल अनेजा सर के मार्गदर्शन में और इस तरह से जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनके प्रेरणा से, सहयोग से अवश्य इसे UGC केयर लिस्ट में समाहित करने का प्रयास करेंगे। कुछ तस्वीरें, फोटोग्राफ्स संभवतः उमेश सर के लिए फायदेमंद हो सकती है, उन्हें पता चलेगा क्योंकि उन्हें लास्ट में अपने वक्तव्य को रखना है, तो इसको देख करके वो जान लेंगे कि क्या क्या हुआ है। आप देखिए उद्घाटन सत्र की तस्वीरें हैं, बच्चों ने बहुत प्यारी सी प्यारा रंगोली बनाया था। मुझे लगा ये भी आप लोगों से साझा किया जाना चाहिए, ये भी आउटकम में ही आएगा क्योंकि उन्होंने बड़े मेहनत से NSS के बच्चों ने प्रयास किया था। हमारे यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग एकदम पूरे विधि विधान से करते हैं, मंगलाचरण के साथ तो करते ही करते हैं, दीप प्रज्वलन भी अवश्य होता है, वो भी आप लोगों के सम्मुख है। प्रिंसिपल मैम हमारी समादरणीय प्राचार्य महोदय आप लोगों के सम्मुख दिख रही हैं, इनकी प्रेरणा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, तो वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करती हुई। इसके अलावा मैथ्यू वर्गीस सर को सुनने का सौभाग्य मिला, ये बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और आप डिसेबिलिटी पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। न जाने कितने दिव्यांग लोगों को इन्होंने नई संजीवनी प्रदान की है, तो इस सत्र में इनको भी हमें सुनने को मिला इस सेमिनार सम्मेलन के दौरान। जाहिर सी बात है ऐसे विद्वानों को सम्मानित करना हमारे लिए सम्मान की बात होती है, तो प्राचार्य महोदय ने उनका सम्मान भी किया। आप देख पा रहे होंगे स्मृति मैम बड़े तल्लीन होकर के बातों को सुन रही हैं, यद्यपि हर कार्यक्रम का खाका तो रखती ही हैं लेकिन बड़े ध्यान से सुनती हैं, तो तस्वीरों में प्रतिभागियों के साथ आप उन्हें भी देख पा रहे होंगे। मुझे लगता है यादें आप लोगों की ताजा हो जाएंगी, जो लोग ऑनलाइन थे ऑफलाइन नहीं आ पाए वो ऑफलाइन इन सबको देख पा रहे होंगे। इस दौरान शोध स्मारिका लॉन्च की गई, वो मैंने पहले ही बताया, उसकी तस्वीरें भी आपके सम्मुख रखा हूँ। अच्छी बात ये रही कि इसको मीडिया कवरेज भी अच्छे ढंग से मिली है, इस कॉन्फ्रेंस को, वो भी आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। शुरू से ही मीडिया की नज़र हमारे इस कॉन्फ्रेंस पे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरा ये वक्तव्य उमेश सर के लिए और अन्य जो प्रतिभागी हैं उनको थोड़ा सा उनका रिवीजन हो गया होगा, और जो लोग पूरे सत्र में मौजूद नहीं रहे, मैं कोशिश किया कि उसका एक सारांश उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओवर टू यू नुपुर। अब मैं डॉक्टर उमेश कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचारों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सर मेरे को जाना होगा आप इस मीटिंग में। स्मृति प्रमोद जी
उमेश जी, मैं रह नहीं पाऊंगा आपके वक्तव्य के लिए, मुझे क्षमा कीजिएगा। एक बहुत आवश्यक एंगेजमेंट है, पर मैं इसको मिस करूंगा। वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू स्टे फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको उपलब्ध कराएंगे, आप इसे बाद में अवश्य देख पाएंगे। Sir, thank you so much, sir, for being here. Thank you very much. Your presence is always required. Yes, we have missed you offline. I know. I have also missed your hospitality. I will be there very soon. Thank you very much for inviting me and giving me this honor. Thank you, everyone. Bye bye. इससे पहले उमेश सर का उद्बोधन हो, मैं उनसे एक अनुमति चाहूंगा। हम लोगों की परंपरा रही है कि जब भी दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई अध्यापक अथवा कोई बच्चा बहुत अच्छा कार्य करता है, कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, तो उसे सम्मानित किया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने सम्मान प्रदान किया था, और इस बार जो यह हमारा ये सम्मान देने की प्रक्रिया रही है, वो इस बार भी एक बच्चे का चयन हम लोगों ने किया है उसके सीवी के आधार पे। और हम तो उस बच्चे से हम लोगों ने कभी भी मतलब उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि वो आगे भी बहुत अच्छा करेगा, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अभी तक का परफॉर्मेंस। तो ज्योति मैम, आप सुन पा रहे हैं? ज्योति मैम विराजमान है वहां पे? और स्मृति, ये क्या नाम है, वो बच्चा भी है, नेहा वैष्णव। नेहा वैष्णव, नूपुर मैडम, देखो नेहा वैष्णव नाम का बच्चा वहां पे है, विराजमान है। She is here, sir. है, बिल्कुल है। अब एनएसएस का कोई बच्चा अगर इसको लाइव टेलीकास्ट वो कर दे, उसमें जुड़ जाए। हाँ, आस्था, ठीक है। तो मैं चाहूंगा राव सर से इनको सम्मानित कराया जाए। इनको मैत्रेयी विशिष्ट मेधा सम्मान 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। We would like our online audience to also see this. Can I request Neha to please come and get another picture clicked with sir, so that our online audience can also see that, witness that moment once again. Thank you so much. नूपुर, अगर आप इनको 2 मिनट बोलने का अवसर दोगे तो और अच्छा लगेगा। नेहा भी आकर के अपनी बात रखें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। So once again, a very loud round of applause for Neha. I'm sure she's an inspiration for all her colleagues, all her friends, and she will continue to inspire everybody else outside of Maitri College as well. Very well done, Neha. Neha, can we have you here on the desk to say a few words? So good afternoon, everyone. Respected our chief guests, all my teachers, and my dear friends. Okay, so thank you. First of all, thank you so much for this, and I'm very glad to receive this. It's been a very मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे कि मैंने डिसीजन लिया 12th के बाद कि मुझे ड्यू से ग्रेजुएशन करनी है, एंड एवरीबडी इन माई फैमिली दे आर लाइक कि कैसे जाओगे इतनी दूर। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, एंड मुझे रोज मेट्रो से ही ट्रैवल करना पड़ता है, और थोड़ा सा हेक्टिक होता है मेरे लिए, बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे था कि मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है। सो देन तो एक्चुअली जो नॉर्मल लोग, आप सब लोग भी हैं, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैंने भी डिसाइड किया कि थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे भी करना पड़ेगा, बट मुझे करना है। तो देन एवरीबडी सपोर्टेड मी इन माय होम, एंड दे विल कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जाओ, आप पढ़ो, बस आपको अपना 100% देना है। सो एंड ऑल्सो आई पर्सनली थैंक यू मैत्री कॉलेज, तो उन्होंने मुझे इसके लिए चूज किया। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।
invite our guest, Dr. Umesh Kumar Singh from the Institute of Advanced Sciences, School of Indic Studies, USA, to please come up and share his thoughts. And sir, sorry for making you wait and keeping you awake for so long. नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। मैत्रेयी एक तरह से मेरी अपनी संस्था रही है। मैत्रेयी से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है और घर में अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको ये नहीं कहा जाता कि वो उसने प्रतीक्षा की, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपने घर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने इसमें बुलाया। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं पूरे समय तक नहीं रह सका। इस समय चूंकि छुट्टियों का समय चल रहा था तो मैं अभी यात्रा में ही हूँ, कल तक रहूंगा। और ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सबसे पहले मैं इसके जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के विक्रम राव सर और प्रोफेसर हरितमा चोपड़ा मैम और प्रोफेसर अनिल के अनेजा जी और समस्त जितने भी प्रतिभागी गण हैं, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित है, फर्स्ट ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए आप सारे लोग जिनका भी इसमें वो रहा बड़े बधाई के पात्र हैं, बहुत सम्मान के पात्र हैं जिन लोगों ने भी इसमें शोध पत्र प्रस्तुत किए। जो विकलांगता का जो विषय, विकलांगता नहीं इसको हम दिव्यांगता कहेंगे, इस समय जो है विकलांगता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इस विषय पर हमारे देश में बहुत पहले से ही तरह तरह से उदाहरण मिलते रहे हैं और एक चिंतन रहा है। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें, वेद चूंकि मेरा अध्ययन का विषय क्षेत्र रहा है, तो सबसे पहले हमें नाम मिलता है अष्टावक्र ऋषि का। अष्टावक्र ऋषि, उनका नाम ही अष्टावक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनके सारे अंग 8 जगह से टेढ़े थे। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, और उसमें भी वो इन चारों के अतिरिक्त भी और उनके शरीर में बीमारी थी और उनको समस्या थी, उनका नाम ही अष्टावक्र रख दिया गया। और जिस तरह से उनको समस्याएं हुई, किसी तरह से उन्होंने फिर भी वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी बने। और कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे आज हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजा जनक के यहाँ कॉन्फ्रेंस थे तमाम सारे विद्वानों की, वो अपना मत प्रकट करने के लिए पहुंचते हैं और सारे लोग उनके ऊपर हंस पड़ते। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक बुद्धिजीवी जो किसी कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रखने जा रहा है और उसकी दिव्यांगता को लक्षित करके पूरी की पूरी सभा उसका उपहास उड़ा रही, तो कल्पना कर सकते हैं कि उसको कितना अपमान जो है झेलना पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद मिलता है कि उन्होंने उसका एक समुचित उत्तर दिया, एक तरह से कहें मुंहतोड़ जवाब दिया, और उन्होंने जो भी संबोधित किया वो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनकी जो बुद्धिजीविता रही, उसके बाद वो पूरे सभा को निरुत्तर करते हैं। वो शास्त्रार्थ जो कॉन्फ्रेंस या डिबेट होती है उसको जीतते हैं, और बाद में फिर उनके नाम से हम देखते हैं कि कई सारे शास्त्र पढ़े हुए, अष्टावक्र गीता उन्हीं के नाम से है। वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं तो जैसे दुनिया के एक सबसे बड़े साइंटिस्ट में कहा जाए तो स्टीफन हॉकिंग, जिनके बारे में कहा जाए तो उनका केवल दिमाग कार्य करता था, बाकी पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, वो काम नहीं करता था, और वो सपोर्ट सिस्टम पर वो जीवित थे। और उन्होंने जो कुछ भी अपने विचार दिए, पूरी दुनिया उससे लाभान्वित रही। उनकी किताब जीरो बहुत चर्चित हुई थी, हम लोग उसमें ग्रेजुएशन में थे, और कई बार ये था कि हाँ इसको पढ़ा जाए, हालांकि वो मैथमेटिकल बुक थी, ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते थे कि उसको पढ़ा जाए, थोड़ा बहुत प्रयास भी किए। इसके बाद ये तो बड़े नाम हुए, और हम लोग अगर अपने दैनिक जीवन में देखें, प्रोफेसर अनिल अनेजा सर को हम लोग देखते हैं। पिछली बार मुझे याद है मैत्रेयी कॉलेज में ये नवीन यूनिट ने किया था एक कार्यक्रम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें इस विषय को लेकर के बहुत सारी चीजें जानने को मिली थी। और मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि उसमें जैसे हम लोगों के सामने एक नया संसार खुल पड़ा। जब हम लोग पहले तो हम देखते थे कि अष्टावक्र की कहानी हमारे समक्ष थी कि हाँ किस तरह से जो दिव्यांगजन होते हैं उनको समस्याएं होती हैं, किस तरह से समाज की उपेक्षा झेलनी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है। उसके बाद जब हम इस कार्यक्रम में आए, एनेबलिंग यूनिट ने जिसको आयोजित किया था, तो हमने देखा कि जो हम लोग जानते थे वो सब तो बहुत कम था,
जैसे कि हम लोग शतांश जानते हो और यहाँ आने के बाद और बाकी 99% जानने को मिला कि किस तरह से जितने भी दिव्यांग जन हैं उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं हो सकती हैं, उनके प्रति समाज में समाज की कैसी भावना होनी चाहिए, कैसे उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए। और दूसरी चीज कि दिव्यांग कोई जन्मजात होता है, कोई बाद में भी हो सकता है, कोई भी कभी भी हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के कोई पाप रहे हों, कुछ कर्म रहे हों और उसके कारण मिल जाता है। कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी वो विकलांगता का शिकार हो सकता है। इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये हमारे साथ नहीं घटित हो सकता, किसी के भी साथ हो सकता है। और उसके बाद समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करे और उसको उनको आगे बढ़ाए और यथोचित सम्मान दे। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं, खास तौर से जिनको हम दिव्यांग जानते हैं, अपने आप में जो पूरे अंगों वाले हैं उनसे ज्यादा कठिन मेहनत और उनसे ज्यादा योगदान देते हैं बौद्धिक क्षेत्र में भी। और वो अपने आप में एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में होते हैं, बहुत इंस्पायरिंग पर्सन होते हैं, भले ही हमारे लिए सहज उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हम कहेंगे डॉक्टर स्मृति जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, इन लोगों को मैंने देखा है। पिछले साल मुझे याद है कि हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, 3 महीने के 4 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स था। उसमें डॉक्टर स्मृति सिंह, कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारे लोग अपने आते थे कि समाचार कि हमारे मित्र नहीं रहे, ये प्रोफेसर नहीं रहे, और उसके बावजूद कोरोना को भी सर्वाइव करते हुए डॉक्टर स्मृति सिंह हम लोगों के बीच में, हम लोगों के साथ जुड़ी रही, काम करती रही। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, अगर इनको कहा जाए तो एक लिविंग लीजेंड है। अगर माउंट एवरेस्ट को भी पार करना पड़े और इनको चुनौती दी जाए तो कदाचित वो पार कर जाएंगे। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च करता था, पीएचडी मेरा चल रहा था और उसमें ये एमफिल करना, मुझे नहीं पता था, इनका फोन आया कि भैया मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि हाँ प्रमोद कौन है, कैसा है, पहले मैंने नहीं मिला था, मुझे केवल फोन आया, मुझे लगा कि हाँ बीएचयू से कोई लड़का आया होगा, आ जाएगा। मैंने कहा आ जाओ तुम। और मैं देखता हूँ बिना किसी कैलिपर के, बिना किसी सपोर्ट के, केवल एक लाठी लेकर के और उसके बाद किताबों का भारी भरकम बोझ लेकर के 4 मंजिल, और वो भी एकदम स्पाइरल सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो ऊपर हमारे कमरे तक आए। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि आज अगर किसी को बोझा दे दिया जाए और 4 मंजिल चढ़ने के लिए बोला जाए, कितने लोगों का दम फूल जाएगा और नहीं कर। हमारे सामने ऐसे लिविंग लीजेंड्स हैं, चाहे वो डॉक्टर स्मृति सिंह हो, अनिजा सर हो, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह हो, के बारे में जितना कहा जाए कम है। और इन सब के पीछे मैंने देखा है प्रोफेसर हरिकनाथ चोपड़ा, जब तक किसी एक अच्छे संरक्षक के द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिलता तब तक अच्छे अच्छे लोग भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कोई कितना भी अच्छा बीज हो, अगर उसको पिच रोड पर बो दीजिए, उसर में बो दीजिए, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह या इनेबलिंग यूनिट जो कुछ भी कर रही है मैत्री कॉलेज, तो उसके पीछे अगर किसी का एक बहुत बड़ा योगदान है तो प्रोफेसर हरिकनाथ चोपड़ा। कई सारे कार्यक्रमों में मैंने देखा है, मैं स्वयं फिजिकली वहां पर जाकर के कार्यक्रम लेक्चर वगैरह ले चुका हूँ, तो मैंने देखा है मैम ने जितना सपोर्ट किया है, जितना काम करती हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत काबिल तारीफ। और सबसे खुशी और बधाई की बात है हम सबके लिए कि एनेबलिंग यूनिट मैत्री कॉलेज एक जर्नल शुरू कर रहा है, इंटरनेशनल जर्नल, और बाइलिंगुअल है। तो इसमें मैं अपनी ओर से एक सुझाव जोड़ना चाहूंगा। बाइलिंगुअल जर्नल है और दुनिया भर के लिए है, तो कोशिश करें जो भी इसके संपादन मंडल में हो कि वो कम से कम एब्स्ट्रैक्ट और टॉपिक को भी बाइलिंगुअल रखें, जितने भी हैं। अगर हिंदी का पेपर है तो उसका भी एब्स्ट्रैक्ट और टॉपिक इंग्लिश में दें जर्नल में, और अगर इंग्लिश में कोई पेपर आ रहा है तो उसको भी वो हिंदी में कम से कम एब्स्ट्रैक्ट और टॉपिक बताएं, ताकि दोनों ही भाषाओं के लोग लाभान्वित हो सकें। और ये परंपरा जो है कई सारे देशों में, कई सारे जर्नल्स के, दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित जर्नल्स में मैंने देखा है कि लोग करते हैं। अगर उनका ऑडियंस बड़ा है और उन तक अपनी बात पहुंचानी है तो करते हैं, और हिंदी का हमारा ऑडियंस काफी बड़ा है। भले ही मैंने देखा कि यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 55 में 12 पत्र हिंदी के आए और बाकी सारे अंग्रेजी के थे, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का एक बहुत छोटा वर्ग है इसमें, इस विषय में पेपर लिखने वाला, लेकिन भारत की जनसंख्या हिंदी भाषियों की बहुत अधिक है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में भी अगर ये आगे बढ़ता है और लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा सुझाव है इस जर्नल के लिए।
और बाकी आप लोगों ने तमाम सारे प्रतिभागियों के द्वारा इसमें जो है जो भी शोध पत्र पढ़े गए होंगे बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना होगा। और हमारे एक प्रेरक व्यक्तित्व प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा सर, उनके जो है लाभकारी व्याख्यानों से हम लोग पहले भी लाभान्वित होते रहे हैं। और डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, इनके भी तमाम सारे व्याख्यान हम लोगों ने सुन रखे हैं। बहुत अच्छा, ये लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही प्रेरक है और समाज में बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान है। और कुछ लोगों के ऊपर जिनके जीवन में इनका सीधा प्रभाव पड़ता है, जिन लोगों को इन लोगों ने सीधे लाभान्वित किया है, उनके लिए तो ये लोग किसी भगवान से कम नहीं। तो मैं आप सारे प्रतिभागियों को, सारे आयोजन मंडल को और जितने भी लोग इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, वो सभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा प्रोफेसर हरिमा चोपड़ा मैडम को। इन्होंने जो है जिस तरह से एनेबलिंग यूनिट को पूरा संरक्षित किया है और पूरा आगे बढ़ाती हैं, वास्तव में ये बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रमोद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। आपका जो प्रेरक व्यक्तित्व और प्रेरक वचन है वो निस्संदेह हम लोगों के लिए हमेशा ही पाथेय का कार्य करता है। और सच पूछिए तो आप लोगों की प्रेरणा ही है जो कुछ हम लोग कर पाते हैं। यद्यपि प्राचार्य महोदय, आपने सही कहा कि उनकी प्रेरणा के बिना कुछ संभव नहीं है, उनके संरक्षण के बिना। तथापि आप जैसे जो व्यक्तित्व हैं उनसे भी हम लोग प्रेरित होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जब आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं तो निसंदेह उससे हमारा ये कार्यक्रम या इस तरह के जो भी कार्यक्रम हैं उन्हें हम कर पाने में सफल होते हैं। नाउ ओवर टू यू नूपुर। So we now come to almost the last leg of this valedictory session, whereby we present the certificates to our presenters, to the students who have been working so hard to make this event a success, and also the organizing committee members. To do the honors, I would like to invite our guest, our today's guest, Mr. KVS Rao, on stage to please do the honors. Joining him will be Dr. Jyoti Singh, who is one of the conveners of our conference, and Dr. Smriti Singh, who's also a convener. So I'd like to invite all three dignitaries to please come up on stage to give away the certificates for the conference. Can we have a round of applause, please? नूपुर, सबसे पहले जो प्रतिभागी आए हुए हैं बाहर से पेपर प्रेजेंट करने, उनको दिलवाइएगा। जी सर। So we begin with the certificates of the presenters who've joined us from outside. First, we have Dr. Vandita Gautam. Can we please have you on stage, ma'am? Thank you so much for your wonderful presentation in the conference. Can we have a round of applause, please? Next, I would like to call upon Dr. Tejendra Kumar, who's the next presenter for this conference. Dr. Tejendra. Dr. Aruna Grover from Maitrey College. Mr. Chetan SV, a research scholar from IIT Hyderabad, who presented 2 phenomenal papers along with his other colleagues. Congratulations, Mr. Chetan. Mr. Saksham Arora from the Department of English, Delhi University, who's also a PhD research scholar. Congratulations, Mr. Saksham. .
Mr. Tufail Firdaus is another presenter. Can we have a volunteer to please help sir up on the stage? Mr. Tufail Firdaus has joined us from Jammu and Kashmir, particularly to present to present his paper in person at the conference. Many congratulations, sir. Mr. N. Ramesh Kumar is the next presenter who we would like to congratulate. Congratulations, Mr. Kumar. Next, I'd like to call upon Dr. Kumudrani Garg for her presentation in the conference. Can we have you on stage, ma'am? We would now like to give away certificates to the organizing committee members. The first certificate is for our very own Dr. Nupur Chawla. Next, I would like to call upon Dr. Anirudh Oja from Department of Sanskrit Metri College. Mr. Sunil Kumar, who's the head research wing, is not here with us. Mr. Satendra Singh, Ms. Shivali from the Department of Commerce, Metri College. Dr. Kumudrani Garg from Department of Sanskrit College. एक छोटी सी घोषणा करनी यह है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, उनके सर्टिफिकेट्स रेडी हैं। हम लोग यथाशीघ्र उनको स्पीड पोस्ट करेंगे। अगर वो ई वर्जन का रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें सिर्फ ई वर्जन चाहिए, तो उन्हें आज ही हम मेल करा देंगे। और अगर आप सर्टिफिकेट देखिए, इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिख नहीं रहा है, और आप देखना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे बना हुआ है, कैसा लग रहा होगा आपका सर्टिफिकेट, तो जरूर हम आपको दिखाना चाहेंगे। Next, I would like to call upon Dr. Tejendra Kumar from the Department of Zoology, Metri College. As you all can see on your screens, that is a certificate being presented to Dr. Kumar. Next, I would like to call upon Dr. Mithila Bagai from Department of Political Science, Metri College. Dr. Anita Devi, who's also been the co-host for today's valedictory session from Department of Hindi. Dr. Dharmendra Kumar from Department of Sanskrit, who has also worked actively for this. Okay, sir is not here with us. Dr. Rekha Kumari, again from Department of Sanskrit, who's also a part of the organizing committee. Anita. Last but definitely not the least, the most important ones, the conveners of the conference, Dr. Smriti Singh. Can we have a loud round of applause, please?
Dr. Jyoti Singh, who's also one of the conveners of our conference. And our very own Dr. Pramod Kumar Singh, who's another convener for the conference, but he's joined us online. Your certificate is with us, sir, and of course, without your presence, none of this would have been possible. So, Dr. Pramod Kumar Singh, convener of this conference. Now we move on to certificates for our NSS volunteers. I hand it over to Anita. अनीता जी से पहले कार्यक्रम शुरू करें, कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं, उनका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि जो लोग पेपर प्रेजेंट किए हैं उनको मेल से जाएगा, उनको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, और जो लोग पार्टिसिपेंट हैं, जितने प्रतिभागी लोग हैं, उनको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको हमारे पास डिटेल आ चुका है, 1-2 दिन में आप सभी को ई सर्टिफिकेट, जिन्होंने अटेंडेंस भरा है, किसी भी सत्र में अटेंडेंस दिया है, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, तो उसकी चिंता ना करें। थैंक यू सो मच। Okay, all the participants, those who have participated as attendees, they would be receiving e-certificate in 1 or 2 days. They have filled up attendance and we would be providing you certificate. Don't get hassled. Here is lots of queries about certificate of participation. You would be receiving certificate. Yeah. Now, our only, like all the program happens, as Pramod has mentioned, our students are backbone of it. They work hard, they prove it, they love the college, they listen to us, and they are excited about everything. So we call out our NSS students for now their certificate. They would be, those who have completed NSS hours, they would be receiving their certificate. Thank you so much, students. You are backbone of entire college and you are backbone of us. Because of you, we could have courage and we could have whatever we could do. We need you always. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शिवानी कुमारी, दोराम मैथ्यू, योगिता प्रजापति, महक यादव, हर्षिता चौधरी, ऐसे ही बोल देते हैं ना। ऑनलाइन जो प्रतिभागी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो बने रहेंगे, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स अभी बाकी है, लिहाजा अवशेष रह गया है, आप लोग थोड़ी देर और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। यादव, मल्होत्रा, योगिता, दोराम मैथ्यू, श्वेता आर्य,
Ashita